Hello, hi, hope you are well and doing great. This is our second video on figures of speech or poetic devices. In our earlier video, we talked about some important figures of speech and some of the other figures of speech were left. So in this video, we will talk about those figures of speech. As we have discussed earlier, words or phrases that make our language embellished, effective, ornamented, impressive and appealing to the listener or reader are called figures of speech. अब यहाँ पे एक बहुत सर्टेन एग्जांपल जैसे आप कहते हैं जी लव इज अ बैटलफील्ड the sayer or the writer of the sentence not only through this sentence has told us about his ideology or what is his point of view about love and what is his style. इससे हमें इसके स्टाइल के बारे में भी पता लगता है. He has used a figure of speech that is called metaphor where he or she has compared love with the battlefield on the base of certain common qualities between these two words. Other than that, if we read this sentence, she is as beautiful as woman, this is the personal pronoun used by the sayer or writer of this sentence, and he or she has used simile as a figure of speech in this sentence in order to beautify the beauty of the woman by comparing it with the moon. Okay, moving on now, talking about the first figure of speech that we have to discuss today, alliteration. Alliteration is the repetition of the same sounds in the beginning of neighboring words. जब हम same consonant sounds को same sounds नहीं consonant sounds को जो आपके शुरू में neighboring words के start में आए तो उसे हम कहेंगे alliteration. Let us take an example. She sells seashells at the seashore. तो यहाँ पे जो आपका सा sound है, it is same and it is a consonant sound. Remember one thing, same consonant sounds and where they have to be in the beginning of neighboring words. Blue bells are blooming, ba and ba sound. Water wonderland where Winnie was, again W sound जो है आपके पास वो जो sound होता है वो भी यहाँ पे same आ रहा है. Moving on to consonants. Consonants is also a figure of speech that refers to repeated consonant sounds. Again यहाँ पे भी consonant sounds होंगे but they are in the middle or at the end of the word. जो अलिट्रेशन थी, अलिट्रेशन आपके स्टार्ट ऑफ द वर्ड पे कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है और कॉन्सोनेंट्स जो है आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द वर्ड. यहाँ पे अगर देखा जाए रा साउंड आपका इन दो वर्ड्स में सेम आ रहा है, गा साउंड भी सेम आ रहा है. दिस कुड बी कॉल्ड एज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंस. उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास जो बर्निंग है इसके अंदर भी आपके पास जो है ये रा साउंड अगेन सेम आ रहा है इनमें. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स. और इसके अलावा अगर आप देखें पीटर पाइपर पिक द पैक ऑफ पिकल्ड पीपर्स. अब यहाँ पे अगर आप पा साउंड स्टार्ट पे लें तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. लेकिन अगर आप ये का साउंड को कंसीडर करें, पिक्ड पैक एंड पिकल्ड, का साउंड जब आपका यहाँ पे सेम आएगा देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट्स. Moving on, assonance. Assonance is the repetition of vowel sounds in words that are close to each other. Alliteration, consonant sounds beginning of words. Consonants जो था आपके पास जो है वो consonant sounds की repetition middle और end of the word. जो assonance होता है वो repetition होती है आपकी vowel sounds की, ये याद रखिएगा. जैसे हमने example दी no pain no gain. इसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप देखें ए आई साउंड नो पेन और यहाँ पे भी आपके पास ये ए आई दोनों साउंड सेम आ रहे हैं. द काइंड नाइट, अगेन यहाँ पे आप देखें आई साउंड आपके पास जो है यहाँ पे वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट सेम आ रहा है. देन वी हैव टाइगर टाइगर. अब यहाँ पे टाइगर ये यहाँ पे भी आपके पास जो साउंड है वो सेम आ रहा है. सो व्हेन वी हैव द सेम वाउल साउंड इट इज कॉल्ड एज एजोनेंस. Oxymoron. It is a figure of speech that is used to combine two contradictory ideas with opposite meanings. जब आप लोग दो डिफरेंट कंट्राडिक्टरी आइडियाज जिनके आपस में मीनिंग्स डिफरेंट होंगे उन्हें आपस में कंबाइन करते हैं तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. जैसे अगर मैं कह दूं chaos, हाउ chaos कैन बी ऑर्गेनाइज्ड. सेकंड अगर मैं कह दूं sorrow एंड इट इज स्वीट. So these are two different or contradictory ideas, and when we combine these contradictory ideas it is called oxymoron. And you can see brawling love, loving hate, then we have melancholy merriment. Antithesis. It is a figure of speech that strongly contrasting ideas placed in which strongly contrasting ideas are placed in juxtaposition. Antithesis में जो आपके strongly contradictory ideas है
उन्हें आप जस्टापोजिशन एक दूसरे के साथ प्लेस करते हैं। आप कहेंगे ऑक्सीमोरॉन में भी होता है, बट ऑक्सीमोरॉन में ही हो सकता है, या तो वो जो फर्स्ट वर्ड हो सकता है वो उसका एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो सकता है, या फिर वो कंपाउंड नाउन का भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एंटीथेसिस में आपके पास देयर आर टू डिफरेंट क्लॉजेज एंड दोज क्लॉजेज आर कंबाइंड थ्रू एनी कंजंक्शन और सेमीकोलन और कॉमा के थ्रू आप लोगों ने उन्हें कंबाइन किया, और दोनों जो क्लॉजेज होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट आइडियाज दे रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करें होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अब ये जो है दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्सप्रेशंस फ्रॉम चार्ल्स डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। हाउ इज इट पॉसिबल? अब यहाँ पे देखे पहले एक आइडिया आ रहा है, फिर दूसरा, इट वाज द एज ऑफ विजडम एंड इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। अब यहाँ पे भी देखे दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आ रहे हैं, एंड इट मूव्स ऑन। चार्ल्स डिकन अपने नॉवल का स्टार्ट इससे करता है। आगे चलते हैं तो देन वी हैव chiasmus इज अ टू पार्ट सेंटेंस और फ्रेज वेयर द सेकंड पार्ट इज द रिवर्सल ऑफ द फर्स्ट। इसके अंदर जो है chiasmus में आपके पास जो फर्स्ट सेकंड सेंटेंस होगा, सॉरी सेकंड क्लॉज होता है, इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट क्लॉज। जैसे अगर हम कह दें जी लव एज दो यू विल हेट सम टाइम, हेट एज दो यू विल सम टाइम लव, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है। यू कैन टेक द बॉय, दे बॉय नहीं, यू कैन टेक द बॉय, इसको अगर हम कोशिश करते हैं रेज करने की, यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ विलेज बट यू कैन नॉट टेक द विलेज आउट ऑफ द बॉय। मीन्स इफ अ बॉय लव्स द विलेज सो मच, तो आप उसे दूर तो लेके जा सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर वो चीज़, उस चीज़ से प्यार बस रहा है विलेज से, आप उसे नहीं निकाल सकते। मूविंग ऑन, एपिग्राम अगर यहाँ पे देखा जाए तो एपिग्राम इज अ शॉर्ट विटी टर्स स्टेटमेंट जो आपकी होती किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। इट कुड बी सेट्रिकल एंड फनी एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर कहें जी लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स, फ्रैंकलिन ने ये कहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट कोट। तो आप जो भी चीज़ हासिल करते हैं, इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू स्मॉल स्टेप्स। You take small and small steps, and then with the passage of time you are going to go for bigger achievements. Moving on to hyperbole. Hyperbole is a figure of speech that is used to exaggerate something. आपके जो है strong emotional response या जो आपके emotions की representation जो बहुत strong होते हैं, उनकी representation के लिए हम hyperbole का इस्तेमाल करते हैं. For example, my granddad is older than the time means he is too old. I'm so hungry that I could eat a horse. This means that I'm so much hungry. I have told you a million times not to lie. Love is the lie. All these examples are of hyperbole. Litotes. Litotes जो है वो hyperbole के opposite आती है. Litotes is a figure of speech and a form of understatement. उसमें हम exaggerate करते हैं, हम इसमें चीज़ को दिबा देते हैं, लेकिन the thing is that a form of understatement in which a sentiment is expressed ironically. यहाँ पे जो sentiment है हम उसे ironically express करते हैं by negating its contrary. हम उसके जो contrary उसको हम negate. Let me give you an example, तब आप इसे understand कर लेंगे. It is not the best weather today. हमें पता है कि आज वेदर जो है वो इतना अच्छा नहीं है. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म हम ये कॉमनली यूज कर देते हैं. इट इज़ नॉट द बेस्ट वेदर टुडे. हमें लगेगा कि ये जो है ये इतनी, लेकिन इसका जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो ये रेफर कर रहा है अंडर दैट द वेदर इज इन फैक्ट हॉरिबल, बहुत ज़्यादा हॉरिबल है. आई एम नॉट स्टार्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटोटेस बिकॉज बाय निगेटिंग द एक्सट्रीम वर्ड. इसके अंदर जब आपने कोई एक्सट्रीम वर्ड को निगेट किया, लेकिन ये इरोनिकली यही चीज़ कन्वे कर रहा है दैट आई एम प्रिटी हंग्री. Metonymy पे चलते हैं. Metonymy is a figure of speech in which one object or idea takes the place of another with which it has close association. जिस चीज़ से just on the base of association हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के लिए यूज, जैसे अगर मैं कह दूँ क्राउन, तो यहाँ पे जो क्राउन है इट इज़ यूज टू रेफर और इट रिप्रेजेंट्स एसोसिएशन विद द किंग. हॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड इंडस्ट्री जो उनकी मूवी है उससे रेफर कर सकता है. एकेडमिक्स जो है वो स्कूल, स्कॉलर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बॉयज़, टीचर्स, इन सब को रेफर करेगा. इट इज़ जस्ट ऑन द बेस ऑफ एसोसिएशन. ये अब सेनेकडॉक से रिलेटेड है, लेकिन सेनेकडॉक अकर्स व्हेन अ पार्ट इज रिप्रेजेंटेड. यहाँ पे होल और पार्ट का रिलेशनशिप है. मेटोनिमी में एसोसिएशन की बेस पे हम वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल सायरा बॉट न्यू व्हील्स, तो यहाँ पे जो सायरा बॉट न्यू व्हील्स, तो न्यू व्हील्स वुड रेफर टू न्यू कार. सूट्स वुड रेफर टू बिजनेसमैन. प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड्स एंड आस्क फॉर हर एन हैंड रेफर्स टू आस्किंग अ वुमन टू marry. It is on the base of her hand. It is one part of the whole. New wheels, it is one part of the whole. तो यहाँ पे आप न्यू कार के थ्रू भी न्यू व्हील्स को भी इस तरह भी आप लोग रेफर कर सकते हैं.
Moving on to euphemism. Euphemism is an appropriate expression used in the place of a phrase or words that may be found inappropriate or offensive. It is commonly used in daily language and literature to replace language that some may find displeasing. कुछ एक्सप्रेशंस हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो बड़े डिसप्लीजिंग हो सकते हैं एट दैट मोमेंट, तो हम उनके लिए कुछ अच्छे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म. फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग समवन हु हैज़ डाइड, तो उसको हम कहेंगे दैट यस ही हैज़ डाइड, वी वुड से इन फ्रंट ऑफ हिज और हर रिलेटिव दैट he or she has passed away. तो ये अच्छा एक्सप्रेशन होगा. let go, instead of saying you are fired, it would be good to say let go. Cacophony. Cacophony in literature is combination of words or phrases that sound harsh. जब हम harsh और jeering sound जो बड़े displeasing होते हैं, जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहा जाता है cacophony. इसके अंदर आपके पास ये वाले consonant ba, da, ka, pa, ta and ga are sounds that are used to create a cacophonous sound. Dissonance जो है आप याद रखेगा, cacophony actually deals with the words, और जो dissonance है वो आपके harsh sound से, जैसे आपने कह दिया जी a baby is crying, a person screaming and an alarm going off, ये dissonance में आ जाएगा. और कैकोफोनी में आपके पास चेक करते हैं जी अब आपके पास कौन से वर्ड्स और उनसे कौन से साउंड्स जनरेट होते हैं. ही ग्रंटेड एंड इन अ ग्रफ वॉइस सेड, गा साउंड देखें जी यहाँ पे रिपीट हो रहा है. इन अ ग्रफ वॉइस सेड गिव मी दैट ट्रैश एंड आई विल surely throw it out. He's a rotten, dirty, terrible, trudging, stupid idiot. अभी आप ये इनसे भी आप तंग भी पड़ते हैं कि what harsh words the sayer or the writer is using. अब आगे चलते हैं. यूफनी जो इसके ऑपोजिट है, ये आपके लिए फिर प्लीजिंग साउंड्स होंगे, हार्मोनियस साउंड्स होंगे, दैट वुड बी अपीलिंग टू योर ईयर, जो आपके कानों के लिए बहुत बेहतर और आपको अच्छा लगेगा सुनने में. इन यूफनी वी यूज, अब इसमें हम इस्तेमाल क्या करते हैं, लॉन्ग एंड सेमी वॉल दो सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर मैं कह दूँ सीजन ऑफ मिस एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, अब इन तीनों वर्ड्स में आपके पास जो है यूफनी का इस्तेमाल है. फ्रेंड और मेच्योरिंग में लोड, फ्रूट, वाइन्स एंड थैच में आपके पास यूफनी का इस्तेमाल. मूविंग ऑन टू पन. Pun is a literary device that is also known as play on words. इसको सिंपली यही यहाँ ये कुछ लोग इसे यूँ भी डिफाइन करते हैं, play on words. Puns involve words with similar or identical sounds but with different meanings. यहाँ पे एक ऐसा वर्ड का इस्तेमाल कर लिया जाएगा that seems to have same meaning, लेकिन उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. इसका असल पर्पज होता है it is used in order to create humorous effect, लेकिन बाज़-औक़ात ये सीरियस पर्पस के लिए भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेमलेट, अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. आफ्टर हेमलेट हैज किल्ड पोलोनियस एंड स्टोव्ड हिज बॉडी अवे, द किंग आस्क्ड हिम वेयर पोलोनियस इज. हेमलेट टेल्स हिम ही इज एट सपर. अब यहाँ पे तो ये मतलब हुआ कि दैट ही इज ईटिंग, ही इज सिटिंग एट द टेबल एंड ईटिंग समथिंग ड्यूरिंग नाइट टाइम, लेकिन यहाँ पे आफ्टर डिनर. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो कहता है नॉट वेयर ही ईट्स बट वेयर ही इज ईटन, जहाँ पे वो खा नहीं रहा बट वेयर इज ईटन. इसका ये मतलब है कि उसको कोई और चीज ही खा रही है, मीन्स ही हैज ट्राइड एंड द वर्म्स आर ईटिंग हिम. Caesura. Caesura is the pause in a line of poetry that is formed by the rhythms of natural speech rather than by metrics. अब ये मीटर के थ्रू नहीं, आपने कोई पंक्चुएशन मार्क या नेचुरल स्पीच के दौरान अगर आपने कोई पॉज ले लिया तो इसे आप सिजोरा. सिजोरा विल यूजली अकर कहाँ पे आ सकता है, नियर ऑफ द मिडल ऑफ द पोएटिक लाइन, या ये शुरू में भी या एट द एंड, नियर ऑलमोस्ट एंड से पहले भी. द वुड्स आर, सॉरी यहाँ द वर्ड्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. यहाँ पे देखें ये कॉमा, माई वर्ड्स फ्लाई अप कॉमा, माई थॉट्स रिमेन बिलो. अब सिजोरा का असल मकसद ये होता है कि दैट द ऑथर वांट्स अस टू टेक अ ब्रेक एंड मेक अस थिंक, कि वो हम कुछ सोचें कि व्हाई द राइटर और द ऑथर हैज यूज्ड दीज वर्ड्स. टू बी or not to be, that is the question. To be, he has made a pause, कि क्या whether we have to be or not to be, or whether we should do something or should we not do something. ये भी हेमलेट की फेमस soliloquy से है, रिटन बाय शेक्सपियर, और इसके ऊपर बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है. बोर्ड अनइनफॉर्म्ड नोइंग द घोस्टली सिल्ट, ये आपका चर्च गोइंग से है. Enjambment. In enjambment, the thought does not end in the same line as stanza, but it is continued to the next line as stanza. Caesura में आपका thought को वो ब्रेक देता है एक ही लाइन में, लेकिन enjambment में वो thought को कंटिन्यू रखता है एक लाइन से दूसरी लाइन पे. अगर आप देखें यहाँ से, yet tending to this ground those verbs because it held unseparate so long and equally what sense is found. अब यहाँ पे देखें अदर ही द राइटर द पोइट सॉरी हैज टू यूज कॉमा, लेकिन उसने यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया, और ही डज नॉट वांट अस टू स्टॉप, और वो कहता है कि वी शुड मूव ऑन.
और क्योंकि इट कैन बी कंसिडर्ड एट के ये बातें उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो हमें कंसिडर नहीं करवाना चाह रहा. दिस इज फ्रॉम चर्च गोइंग रिटन बाय फिलिप लार्किन. तो that was all. In our first video we talked about certain figures of speech, and in our second video we have again discussed some other important figures of speech. And I think so if you are going to deal with these two videos, your figures of speech, your issues related to figures of speech would be resolved. And if you have any questions, you can type in the comment box. For that you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.